back. So after our today's maths class, now we are going to begin with our EVS class. And as you all know that in EVS we were learning about different ways of travel. How we can travel from one place to another using different things. We can travel by road using some road transports like car, scooter, bike, auto, rickshaw, and we all know that how long we have to go help in deciding our vehicle. Isn't it? आपको कितनी दूर जाना है ये क्या इस बात पे डिपेंड करता है कि हमें कौन सा व्हीकल यूज करेंगे. If you have to travel very long distance, you cannot go on bicycle, you cannot go on rickshaw. But if you just have to visit nearby market, थोड़ा सा दूर है and you are having things with you, आपके पास बहुत heavy bags हैं, then you prefer taking an auto or a rickshaw, isn't it? But if you want to travel to some other country, to some other state in India also, and we have less time, we prefer air transports, isn't it? Like aeroplane. Then the other air transports are helicopter, hot air balloon, rocket, gliders. We have learnt about them, and we have also learned that there are some things, some vehicles that move on water. They float on water. Like we have ship, we have yacht, we have rowboat, sailboat, isn't it? Then there is a vehicle that can move in the water, water में merge होके, that is submarine. So can anyone tell me? See, whenever we move, now let me come to the other point. देखो, जब हम move करते हैं, हम कोई work करते हैं, we need energy for that, isn't it? हमें energy चाहिए होती है, and from where we are getting this energy? We are getting it from the food we eat. Whatever food you eat, आप जो भी खाना खाते हो, it is having minerals, it is having fats, proteins, lot of nutrients, and all these nutrients give you energy. This is why I always say na, eat healthy food, fruits and vegetables खाना चाहिए, because they are giving you lot of energy, which is again helping you in doing your daily work. जब आप बीमार होते हो, आप ठीक से खाना नहीं खाते हो, तो क्या आप अपनी एनर्जी के साथ प्ले कर पाते हो? नहीं. आप उतनी एनर्जी के साथ ना क्लासेस अटेंड कर पाते हो. So what do you feel? आप बस बेड पे लेटते हो and you feel very lazy. That means you are not having energy to do anything. तो कुछ भी काम करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, isn't it? Now similarly for the vehicles, जब ये vehicles move करते हैं तो ऐसा क्या होता है? How they are getting this energy to move? आपने देखा होगा कार स्पीड से चलती है, कभी स्पीड स्लो कर देते हैं हम, कभी ज्यादा कर देते हैं. So how we are able to do? What is the thing that is giving energy to all these vehicles? Can you tell me that? It is the fuel we use in these vehicles. Fuel मतलब जो भी हम उसको मूव करने के लिए हम उसको एनर्जी का तरीका दे रहे हैं. Now fuel is like we have petrol. There are some cars move on petrol. They use petrol. There are some vehicles that use diesel. Some of the vehicles they use CNG. What is CNG? Compressed natural gas. इसकी जो CNG है, can you see? What is this? आप पेट्रोल पंप पे गए हो कभी मम्मी पापा के साथ कार में, जब उन्हें कार में फ्यूल डलवाना होता है, so there are some booths like this. वहाँ पे इस तरह के कुछ booths होते हैं. So this is one for petrol, then this is for diesel, and this one is for CNG. So what is CNG? CNG is compressed natural gas. Now why the fuels are different? देखो बेटा, every fuel is having their own quality as well as कुछ उनकी drawbacks भी हैं, यानी कि कुछ तो वो अच्छा करते हैं, कुछ वो बुरा. Now if we talk about petrol, petrol is used in the vehicles, so petrol is giving good energy,
बहुत अच्छी एनर्जी देता है जिससे हमारी कार स्पीड में रन कर पाती है। बट द ड्रॉबैक इज ये पोल्यूशन भी करता है। देन वी मूव एंड और ये कॉस्टली भी बहुत होता है, इट इज वेरी कॉस्टली ऑल्सो। देन इफ वी टॉक अबाउट डीजल, डीजल यूज किया जाता है जो बहुत हैवी व्हीकल्स होते हैं, हैवी व्हीकल्स लाइक बस, ट्रक, ये जो बिग बिग व्हीकल्स होते हैं। व्हाई? बिकॉज पेट्रोल इज कॉस्टली, डीजल की कॉस्ट थोड़ी कम होती है, उन व्हीकल्स में ज्यादा फ्यूल यूज होता है। सो टू सेव लिटिल मनी दे आर यूजिंग डीजल। एंड द मोस्ट इको फ्रेंडली जिसको हम कहते हैं दैट इज compressed natural gas। देखो M natural, it is something natural, compressed natural gas, ये स्पीड ज्यादा नहीं देता but it is safe for our environment in context to these two। अगर इन तीनों को हम कंपेयर करें so CNG is safe for the environment। अब CNG किस में डलती है? You must have seen green color buses, green color autos, है ना? आपने देखे कितना कॉमन है मार्केट में, अगर आप देखोगे ग्रीन ऑटोज मिलते हैं हमें। सो ऑल दीज ग्रीन ऑटोज, ग्रीन बसेस, व्हाई देयर कलर इज ग्रीन? टू टेल दैट दीज आर वर्किंग और दीज आर मूविंग यूजिंग द एनर्जी ऑफ सीएनजी। इनके अंदर क्या फिल किया जा रहा है? सीएनजी फिल किया जा रहा है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यूज करते हैं एज अ फ्यूल the vehicles that are having green color on them। Then if we talk about diesel, मैंने आपको बताया जो heavy loads carry करते हैं, जो बड़े vehicles होते हैं, they are using diesel and petrol is the one which we use in car, scooter, bike like this। Clear? अच्छा, ये तो हो गया the one which are using some or the other fuel, but there are some vehicles that don't use any fuel, जिनमें कोई फ्यूल ही नहीं चाहिए होता, उसमें एनर्जी कहां से आती है? लाइक वी हैव बाइसिकल। अब आप बताइए, बाइसिकल में कभी आप पेट्रोल फिल कराने गए हो? नहीं गए। सो हाउ अ बाइसिकल रन? आपकी एनर्जी से चलती है, आप उसको पेडल करते हो। सो यू आर हैविंग योर लेग्स ऑन द पेडल और आप अपने लेग्स को ऐसे पेडल करते हो, तो जो आपकी एनर्जी है उससे वो साइकिल मूव कर रही है, आपकी बाइसिकल उससे मूव करती है। सिमिलरली इफ वी टॉक ऑफ साइकिल रिक्शा, तो जो रिक्शा पुलर भैया हैं वो क्या कर रहे हैं? वो अपनी एनर्जी यूज करते हैं टू पुल। उसमें भी वो सेम साइकिल की तरह अपने पैरों से पेडलिंग कर रहे हैं। दे आर यूजिंग द फुट टू पेडल। देन वन वी हैव बाइसिकल, वी हैव साइकिल रिक्शा। इसमें किसकी एनर्जी यूज हो रही है? ड्राइवर की। जो भी कोई ड्राइव कर रहा है, मैम साइकिल चला रही है तो मैम ड्राइवर हो गए, आप साइकिल चला रहे हो तो आप ड्राइवर हो गए, इजंट इट? तो वन हु इज ड्राइविंग इट, हु इज राइडिंग इट इज गिविंग द एनर्जी टू मूव टू द बाइसिकल। क्लियर? नाउ इफ यू हैव एवर गॉट अ चांस टू विजिट एनी ऑफ द फार्म्स, like we have so many famous farms like Lohagarh farm house, Surajgarh farm house, there are many more such farm house। So you must have seen there are camel carts, bullock carts, horse carts, isn't it? Now what are these? इसमें बैठ के घूमने में बहुत मजा आता है, isn't it? एक छोटा सा वुडन कार्ट होता है, वो कैमल, बुल और हॉर्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। एंड व्हेन दे आर मूविंग, जब वो उनको पुल कर रहे हैं, अपने साथ खींच रहे हैं, तो वो कार्ट मूव होता है एंड वी राइड ऑन देम। सो फ्रॉम वेयर दीज कार्ट्स आर गेटिंग द एनर्जी? दीज एनिमल्स, कैमल, बुल और हॉर्स, वो उनको खींच रहे हैं ना अपने साथ, तो इनको एनर्जी मिल रही है उन एनिमल्स से। और वो एनिमल्स कहां से ला रहे हैं एनर्जी? By eating the food। Clear? Now if we move towards the water transports, we have ship, automatic चलती है but it is using fuel there। Then we have boat, rowboat, आपको याद है जिसमें और यूज होते हैं चक्कू, वो कैसे चलती है? Tell me। ह्यूमन पावर। अगेन जैसे साइकिल चल रही है, साइकिल में यू आर डूइंग द पेडलिंग
अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? You are using your hands. वो चक्कू चलाने में, isn't it? So different vehicles use different ways or different types of energy to move. So some of them use petrol, diesel, CNG. Then some are moving on human energy like cycle rickshaw, bicycle. Some are using the energy of animals like we have camel cart, bullock cart, then we have horse cart, isn't it? Some are using fuels. अब बताया ना, fuels हो गया one way, different type of fuels. Then the other way is the energy of animals, and the third way is energy of us. जो हमारी एनर्जी होती है, like साइकिल और साइकिल रिक्शा we have. Then I told you how different vehicles can be identified on the ground of fuels. Petrol used in car, scooter, generally small vehicles. Then diesel is used by those vehicles which are big and carry heavy load. And CNG, the compressed natural gas, is used in those vehicles which are having green color. Clear? अब ये fuel हमें मिलता कहाँ से है? From where we are getting this fuel? From different pumps, or you can say they have a certain area. Like we go to petrol pump, और वहाँ पे क्या होते हैं? इस तरह के booth होते हैं. There are 4-5 booths and we have to follow our line. हम अपनी लाइन को फॉलो करते हैं, isn't it? Then there is another space for diesel. वहाँ पे क्या होता है? सिर्फ डीजल ही अवेलेबल होता है. And the third one is CNG. तो CNG stations बने हुए हैं जहाँ पे आप जाके अपना फ्यूल फिल करा सकते हो. Clear? Now, can anyone tell me, are these fuels safe to play? No, they are not. बच्चों को, आप लोगों को इन फ्यूल से बहुत दूर रहना चाहिए. They are highly flammable. Flammable क्या होते हैं? इनमें आग लग सकती है. So we should never play with such things. कि मान लीजिए you found something liquid. कई बार क्या होता है, हमारी कार में पेट्रोल फिनिश हो जाता है, पापा carrying it. Though it is wrong, but sometimes there are certain conditions जब ये करना पड़ता है. So don't touch. If Papa is saying don't, then don't touch. Clear? Now let's move towards the book. Something similar we have in the book. Then let us understand what work we'll do, and what is given here is there are some vehicles given. So let's see which vehicle is using which kind of fuel to run. Okay? So in the book you have to open page number 54 as your classwork, and page number 55 as your homework. Clear everyone? So please open your books and let's see how we are going to do the work there. Okay? So class, now please open your EVS book on page number 54. So 54 is your classwork. So open page number 54 and there you will find the topic fuel in vehicles. So we have learnt about how different vehicles use different fuels. Then now it's time to do the work. So first thing we are going to do is write today's date. And mention classwork. Okay. So after this, now what the question says, match the vehicles with the fuel. Circle the one that does not need fuel. Some vehicle can be matched to all three. Now see, there are some vehicles that can use all the three things, like we have petrol, diesel and CNG. I have told you that these are the three different types of fuels we use. Can you see the different ways of their booths? How a petrol booth look,
how a diesel booth look and how the booth of a CNG looks. Isn't it? So now the vehicles given to us is a bus, a van, a robot, a horse cart, or you can call it tonga also. Then we have cycle rickshaw, we have a truck, we have bicycle, and we have a car. Now class, I have also told you कि कुछ vehicles ऐसे होते हैं जिनमें हम तीनों टाइप के फ्यूल्स यूज कर सकते हैं. So can you tell me? Yes, it is car, van, because some of us buy car having petrol engine, some having diesels, and some having CNGs. Clear? So the question is saying now we have to match the vehicles with the fuel they use. और उनको सर्कल करना है जिनको कोई फ्यूल नीड नहीं होता. So first let us circle those vehicles that does not need any fuel. So do you think a bus don't need a fuel? They need it. A van also need a fuel to run. Now we have a boat, a rowboat. Do you think it needs a fuel? No, it does not need any fuel. ये कैसे चलती है? यूजिंग द मैन पावर, जो इसको चलाने वाले की एनर्जी होती है उसको. हाउ? आई हैव टोल्ड यू किस तरह के ये ओर्स होते हैं जिनको हम पकड़ के एंड वी मूव यूजिंग आवर हैंड्स. Isn't it? So what we will do, we are going to circle it like this. Now the next one we have is a horse cart, or you can also call it tonga. Now can you tell me इसमें फ्यूल यूज हो सकता है? तो ये मूव कैसे करेगा? If you will not put any fuel, how it's going to move? This horse will move it. Horse की जो पावर है, horse run करेगा. And if you will have a closer look, you will see कि देखो कुछ ropes को यूज करके horse को tie किया हुआ है यहाँ पे, isn't it? तो जैसे horse आगे move करेगा, this tonga or this cart will also move with the horse. So again, this horse cart is also not needing any fuel to move. Next we have a car. Yes, it needs fuel. Then we have a bicycle. So tell me, is bicycle in need of any fuel to move? No, it does not require any fuel. So let us circle it. It is moving with the energy of rider. जो इस पे बैठ के पेडल करता है उसकी एनर्जी से ये मूव करती है. Then we have a truck. Yes, truck is also needing fuel to move. And we have a cycle rickshaw. So as we have seen in bicycle, same is a cycle rickshaw. Can you see this portion is attached to this bicycle? तो जैसे आप इसको जो भी राइड करता है वो पेडल करेगा तो ये पीछे जहाँ पे पैसेंजर बैठे होते हैं ये मूव करता है उसके साथ. सो अगेन वी डोंट नीड एनी टाइप ऑफ फ्यूल टू मूव दिस. नाउ व्हाट इज द अदर थिंग सेज? वी हैव टू मैच द व्हीकल्स विद द फ्यूल्स. बट कुछ व्हीकल्स ऐसे भी हैं जो तीनों से रन करते हैं तो हमें उनको तीनों टाइप के फ्यूल से मैच करना है. कैन यू टेल मी what do you think this bus will be using to move? It's green in color. तो बताइए क्या यूज कर रही होगी ये बस? This bus is using CNG. Yes. So what we will do, we will take a green color and I'll match this bus with the CNG pump like this. Can you see? The bus will be matched with CNG pump. Now we have a van here. Can you tell me what type of fuel the van will be using to run? Petrol, diesel, CNG. Van can use all three of them. There are different versions. कुछ vans में CNG use होता है, कुछ में diesel use होता है, कुछ में petrol. So what we will do? We'll take black pencil to match it with petrol. Then we will take blue color
to match it with diesel, and green color to match it with CNG. Is that clear? This is how you will do the work. Now, all the both are done. Now we have car. Can you tell me what type of fuel a car is using? Again, this car can use all the three fuels like a van. So what we will do, similarly जैसे van के लिए किया है, we will match it with all three. Black with petrol. Oops, sorry. Then we have blue with diesel and green with CNG. Clear? Now cycle don't need any fuel. Then we have a truck. So can you tell me what a truck is using to move? A truck is using diesel to move. It's a heavy vehicle. It requires a lot of fuel. So it uses diesel. Is that clear to everyone? So this is how you will do your classwork. Now moving towards your today's homework. First, let's write date and please mention homework. Okay. Draw the missing part of the vehicle, blades, wheel and oars. Now see, there are three vehicles given: an helicopter, a boat, a helicopter, a boat and a bicycle. अब इन तीनों में कुछ मिसिंग है. Blades of a helicopter, oar of a boat and wheel of the bicycle. You have to draw them. Then the next question says, mark a tick for the one that does not belong to the set. आप देखेंगे, if you will observe carefully, इनमें से एक odd one out है, तो जो odd है उसको टिक करना है आपको. लिखा है ना, that does not belong, तो जो odd picture है टिक करना. Like we have bullock cart, we have horse cart and we have a bus. So can anyone tell me what is odd here? Bus is odd because it moves on fuel and both of them move using the power of an animal. Like this, जो odd है उसको टिक करना है. And other two you are going to do yourself. Clear? So page number 54 your classwork and page number 55 is your today's homework. So class, I hope you have understood how a vehicle runs. As we need energy to move, same the vehicles also need energy to move. And there are many options for their energy. One is petrol, other one is diesel. Then we have CNG. So what is the full form of CNG? Compressed natural gas. Okay. And the other one are human energy. Like bicycle, जैसे आपको दिखाया. Then we have cycle rickshaw also. Then some are using the energy of animals. आपको मैम ने दिखाया horse cart. Like horse cart we have bullock carts, we have camel carts. अच्छा, आपको पता है जब पहले के टाइम में in the earlier days when there was no fuel, बहुत less होता था. Nowadays तो we have ample fuel, लेकिन जब पहले बहुत कम होता था तो लोग generally what they used to use, bicycle जो हम खुद अपनी एनर्जी से चलाते थे, या to cover long distances they used to have these bullock carts or horse carts. इस तरह के vehicles होते थे. This is why nowadays we cannot see these bullock carts and horse carts moving on the road. Why? Because they move very slowly. Now to save time, to save energy, what we are using? We are using modern means of travel such as car, scooter, bike. और इनको जो स्पीड वाली एनर्जी मिलती है जिससे वो बहुत स्पीड में चल सकते हैं, वो एनर्जी मिलती है इन डिफरेंट फ्यूल्स से. Is that clear to everyone how these vehicles move? Great. So now class, it's all about your today's class.
Now please complete your work and get ready for the next class. Take care.